How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Student, in previous videos, we have completed the reading and the explanation of lesson number 16, Handy Andy at the Post Office. Now today we are doing the exercise of that lesson. Now students, from exercises, first is read and learn. So you have to read all these words and learn it. Now for you I read these words, so you have to listen it carefully. Igneous, ignorant, contempt, appeal, squire, trot, impertinence, superiority, troublesome, brisk, taunt, by and by, confound you, curious, provoke, now and then. From word power students, select words from the text which convey meanings similar to the following. टेक्स्ट से रिलेटेड उन वर्ड्स को हमें फाइंड करना है जो इनकी मीनिंग्स को कन्वे करते हैं. फर्स्ट इज अ लैंडलॉर्ड. हियर द लैंडलॉर्ड इज स्क्वायर. क्विक एंड एक्टिव मीन्स ब्रिस्क. अ सिली पर्सन, स्टूपिड. To make someone angry, provoke, request, appeal. Now listen once again. Landlord, squire, quick and active, brisk, silly person, stupid, to make someone angry, provoke, and request is appeal. Now students, next question is match words with opposite meanings. All of you know what is opposite meanings or we call it antonyms. Opposite meaning इन शब्दों के विपरीत शब्दों से, विपरीत अर्थ से हमें उसे मिलाना है, मैच करना है. First one is remember. So remember, the opposite of remember is forget. Remember याद रखना, forget भूल जाना. Arrive, depart. Arrive means आना, depart means जाना. Appear, वैनिश. अपेयर मतलब सामने आना, वैनिश मतलब गायब हो जाना. इम्पॉसिबल, पॉसिबल. जो चीज असंभव है उसका उल्टा होगा संभव. सेलेक्ट, रिजेक्ट. चुना हुआ और छोड़ा हुआ. हियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन. रिमेंबर, फॉरगेट, अराइव, डिपार्ट, अपेयर, वैनिश, impossible, possible, select, reject. Here students are two words from the lesson beginning with the prefix im. lesson में in prefix का यूज करते हुए दो words आए हैं, impossible और impatient. तो prefix im जो है वो antonyms या opposite बनाने के लिए किसी भी root word में help करता है. For example, possible, impossible, patience, impatience. Now there are some few words beginning with the letters im. In which of these words do these two letters act as a prefix and in which are they part of the root words? तो इनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन से वर्ड में एज अ प्रीफिक्स यूज किया गया है im को और उसका रूट वर्ड क्या है. सो तो वर्ड्स आर the words in which the two letters im act as prefix. जो वर्ड प्रेफिक्स के जैसे यूज हो रहा है वो है imaginary, immortal, impure and immature. These four words are which the two letters im act as prefix. Now the words in which the two letters im act as the part of root word और जो बाकी के वर्ड हैं, सॉरी हियर नॉट इमेजिनरी, दैट इज इम्परफेक्ट. जो बाकी के वर्ड्स हैं वो हैं आई एम जो है उनमें एज अ रूट वर्ड यूज किया गया है, दैट आर इमेजिनरी, इमिटेट, immense and impact. All these four words are words in which the two letters im act as the part of root words.
So students, you have to write all these answers in your notebook.